Hello, good afternoon, students. Today we will discuss regarding lysosomes. So, what are lysosomes? First of all, underline these lines. Lysosomes are simple, tiny, very small, spherical sac-like structures. Means they are sac-like rounded structures. They are sac-like rounded structures like vesicles distributed in the cytoplasm. They are evenly distributed in the cytoplasm, or each lysosome is having a small vesicle surrounded by, they are having unit membrane, means they are having single membrane around them, and they contain very strong hydrolytic enzyme. What is meaning of hydrolytic? Means they are containing digestive enzymes. So these enzymes are capable of digesting or breaking down all organic material in the form of food, in the form of some germs. So that's why their nature is hydrolytic, means they are they are containing powerful enzymes known as lysozymes, and they are having single membrane around them, and inside this vesicle they contain powerful enzymes. So there are some of the functions of lysosomes, and along with these functions we will discuss regarding which question may arise from these functions. First, lysosomes serve as intercellular digestive system. What this means? Hence they are called as digestive bags. What this means they destroy any foreign particle which enters the cell, such as bacteria or viruses. So in this way they protect the cell from any infection. तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ द सेल. क्यों लाइक दैट वील डिस्कस कि क्या होता है. सपोज करो इन द केस ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं दे आर हैविंग अमीबॉइड शेप. सो व्हेन एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस कम near them, so they engulf, like amoeba, they engulf their foreign particle and make a food vacuole, and inside the food vacuole they contain this microbe inside it. So inside the cytoplasm of the WBC, the lysosomes will fuse with this food vacuole and they liberate their enzymes inside the food vacuole and digest the body of that germ with whatever is coming inside the food vacuole in the form of bacteria or virus. So they destroy the foreign particle and prevent the organism from any of the infection. So that's why they are called as digestive bags of the cell, because they digest or break down any of the foreign particle coming inside the body of the organism. Second is, lysosomes also remove the worn out or poorly working cellular organelles by digesting them and to make them to replenish again. Means they make their replacements. That's why they are called as cellular housekeepers or garbage disposal system of the cell. So question may arise कि why lysosomes are called as garbage disposal units or cellular housekeepers or demolition squads or scavengers. Scavengers means सफाई कर्मचारी. तो इसका क्या मतलब है कि when we are having millions and millions of cells and there is continuous wearing and tearing of cells inside the body, तो जब हमारी बॉडी में से कोई सेल टूट जाता है या वीक हो जाता है या मर जाता है, तो what the lysosomes are doing, वो क्या करते हैं, उन टूटे मरे हुए सेल को क्या करते हैं, जैसे हमारे मम्मी या कोई सफाई कर्मचारी क्या करते हैं, सफाई करते हैं, जो वेस्टेज होती है उसको उठा के ले जाते हैं, उसको साफ कर देते हैं. जस्ट लाइक दैट लाइसोसोम्स भी क्या करते हैं, दे पिक अप द वेस्ट मटेरियल, डेड सेल्स, एंड उसको ब्रेक डाउन करके उसके जो कंटेंट्स हैं इट इज रिटर्न बैक टू द साइटोप्लाज्म सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड बाय द सेल. तो सेल उन चीजों को फिर से यूज करके नए सेल बना दे, और इस तरीके से ये क्या करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल यूनिट की तरह की पुराना सामान तोड़ के उससे नया सामान बनाने में हेल्प कर रहे हैं. सो थर्ड फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स कि ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, lysosomes may burst and enzymes may spill up on their own cells. So in that case lysosomes are called as suicidal bags of the cell. What this means is sometimes when the cell become weak, it is not able to function properly. So what is done कि lysosomes may spill their secretion inside the cell. वो
क्या करते हैं, अपने ही secretions अपने ही पुराने या वीक सेल के ऊपर डाल देते हैं. एंड इन दैट केस व्हेन their hydrolytic enzymes are spilled up in their own cytoplasm, the cell will die away. तो इस केस में इन्होंने अपने ही सेल को मार दिया. That's why they are called as suicidal bag of the cell. So these are three functions of cell. They are acting as digestive bags, they are acting as disposable units, and third one, they are acting as suicidal bags of the cell. So next organelle which we will discuss is mitochondria. So mitochondria is also double membrane structure. You can see this, I have made this simple diagram of mitochondria. First, just underline the lines. Mitochondria are tiny bodies of varying shapes. Means they may be cylindrical, they may be rod shape, they may be spherical, rounded भी होते हैं, saucer shape, oval shape भी होते हैं, spherical भी होते हैं, and evenly distributed in the cytoplasm. Each mitochondria is bounded by double membrane involved. I told you earlier कि some of the cell organelles they are single membrane bound structures and some are double membrane structures. So mitochondria is also a double membrane structure. Two membrane, outer membrane and inner membrane. So जो outer membrane है that is smooth outer bone and it is freely permeable, but inner membrane is selectively permeable and it is thrown into folds. तो ये जो folds में बटी हुई है, I am explaining you from this diagram. This is the outer membrane of mitochondria. This is the inner membrane of mitochondria. This is outer chamber. This is inner chamber of mitochondria. And inner membrane is thrown into folds. So these folds are called as cristae. ये जो finger like structures folds बन रहे हैं, these are called as cristae present in the inner membrane of mitochondria. And on the cristae there are present some structures called as oxysomes. So oxysomes are just like, and also F1 particles, they are lollipop like structures. So what is the function of oxysome? They play an important role in the formation of energy. जो food का breakdown होता है mitochondria में to release energy, that energy is formed in the form of ATP, is formed by these oxysomes, and they are helping in the functioning of the cell. And the jelly-like material present inside the mitochondria is called as matrix. And within the matrix of this mitochondria, a circular DNA, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उसी तरह से सिंगल सर्कुलर डीएनए is also present in the matrix of mitochondria. Along with this circular DNA, mitochondria is also having its own राइबोसोम्स प्रेजेंट इनसाइड द मैट्रिक्स. तो इसका अपना डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपने राइबोसोम्स हैं. That's why mitochondria is known as semi-autonomous body. Semi का मतलब half, autonomous means self-governing. तो ये self-governing क्यों है? इसका अपना डीएनए है तो ये अपना फंक्शनिंग कर लेती है, ये डिवाइड कर लेती है, रेप्लिकेट कर लेती है. इसके अपने राइबोसोम्स हैं तो ये अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकती है, ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, रेप्लिकेशन खुद कर सकता है. आधा काम ये सेल वाला खुद ही ये सिंगल ऑर्गेनेल ही कर लेती है. That's why it is called as semi-autonomic body. तो इसके लिए आप क्वेश्चन ये बना सकते हो, why mitochondria are called as semi-autonomic body? Because they are having their own circular DNA and their own ribosome through which they are able to replicate and divide and produce their own proteins. That's why mitochondria are known as semi-autonomic bodies. और ये जो ऑक्सीजोम्स हैं which are helping in breaking down of food to release energy, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. तो ये फंक्शन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर फंक्शन कि इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. और वो जो एनर्जी रिलीज होती है, सम ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड अप बाय द सेल एज वेल एज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अपनी फंक्शनिंग के लिए. एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज गेट स्टोर्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज powerhouse of the cell. So these are the two major functions of the cell कि ये जो एनर्जी स्टोर हुई है उसको वो बाद में भी यूज करता है. किस कामों में यूज कर सकता है बाद में स्टोर्ड एनर्जी को? कि व्हेन वी आर नॉट हैविंग फूड तो उस टाइम पे हमें एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी इसी एटीपी से स्टोर्ड एनर्जी
से मिलेगी, जिसके लिए हम फंक्शनिंग कर, हम मसल कंट्रैक्शन करते हैं, रनिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए, पढ़ने के लिए भी चाहिए, खेलने के लिए भी चाहिए. सो लेटर टाइम ये जो स्टोर्ड एनर्जी इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी. तो ये स्टोर्ड एनर्जी हमारे मैकेनिकल वर्क में और सिंथेसिस ऑफ सम केमिकल कंपाउंड्स में भी ये एनर्जी यूटिलाइज होती है बाय द बॉडी. इज इट क्लियर? सो यू कैन मार्क द लाइन्स कि आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड. तो वो परमिएबल है इसलिए पोरस है, एंड इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, देयरफॉर हैव एन एरिया, मींस ज्यादा एरिया होता है, मोर एरिया देन द आउटर मेम्ब्रेन. द फोल्ड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टी एंड ऑन द फोल्ड्स देयर आर F1 particles known as oxysomes, right? Mitochondria is filled with the proteinaceous, में प्रोटीन का बना हुआ मैट्रिक्स है जिसमें राइबोसोम्स, सर्कुलर DNA एंड सम फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट. Just like other cells, other organelles, mitochondria are also absent in the case of RBCs of mammals. तो function mitochondria the site of cellular respiration. First यहाँ तक mark कर लो. Rest I have explained you कि why they are called as powerhouse of the cell. Second function इसका major है, they help in synthesis of chemical compounds. The ATP stored in the mitochondria is used in the synthesis of chemical compounds and also help in the mechanical work. Undergoing mechanical work such as contraction of muscles. So why mitochondria are called as semi-autonomous body, that I have explained you earlier. Thank you beta.